and in today's class we will start a new topic that is known as kinematics. Clear है? आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं kinematics. So right now next topic से शुभारंभ करते हैं आज. Next topic is kinematics, which is the first topic of physics. As you can say, इसके बाद एक और टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन. बट सी हियर गाइस, यूनिट्स एंड डायमेंशन वी कैन डू एनी टाइम. क्लियर? यूनिट्स एंड डायमेंशन इट्स अ टोटली सेपरेट थिंग. लेकिन अगर हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स की, तो काइनेमेटिक्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फोर्स. क्लियर? After the next topic, work or energy, then it is connected to center of mass, then it is connected to rotation. So in a nutshell, what we can say, kinematics is basically the starting point of mechanics. Okay, Ranjit. Okay, let's not go into the debate of like which is hard, CBSE or SSC. Right now, all the boards are linked. Yes, 60. No, that will come into force. Okay, वो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा अपना, जब हम फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे. That you simply call that particular topic laws of motion. Okay, Sisti? So all those things, fully laws, all those things will fall into laws of motion. No, kinematics will not be there. See guys, up to जहाँ तक हमने वेक्टर्स को कवर अप किया है, only up to that section will be covered in your test paper. Kinematics will not be there. मतलब कल तक जो हमने किया था वही आपके टेस्ट पेपर में आएगा. Okay guys, so see here, let's talk about kinematics. Yes, I think rechecking option is there, but let me confirm and let you know. Okay, मैं एक बार फिर से उसको चेक कर लेता हूँ and then after then I will let you know guys. Okay. Okay, so can we move ahead? Shall we start with kinematics? Okay, good. Okay, so see here guys, what is the meaning of kinematics? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि kinematics का बेसिक मतलब क्या है. तो kinematics is a branch of physics in which you study about motion. Clear guys? किसके बारे में हमें स्टडी करना है? मोशन के बारे में. Clear? But in kinematics we are not bothered about the cause of motion. For example, if I say a particle is moving with velocity 10 meter per second, तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है कि यार कोई भी पार्टिकल खुद से तो मूव नहीं कर सकता. ऑब्वियसली 100% देयर मस्ट बी सम फोर्स और सम एक्सटर्नल फैक्टर ड्यू टू व्हिच द पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड. कोई ना कोई फोर्स होगा जिसकी वजह से पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इस टॉपिक में हमें मोशन और उसके पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करना है. कॉज ऑफ मोशन, जिसको हम कहते हैं फोर्स, उसके बारे में या उससे हमें यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है. जब भी हम बात करेंगे कॉज ऑफ मोशन की, तो कॉज ऑफ मोशन आपका कहाँ पे फॉलो होगा, दैट वी विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज लॉज ऑफ मोशन. तो देखो, अगर मोशन को हमें स्टडी करना है तो सबसे पहले मोशन के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, व्हाट आर द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ मोशन, लाइक व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज displacement, what is velocity, what is acceleration. जब हम इन बेसिक पैरामीटर्स को स्टडी कर लेंगे, आफ्टर देन वी विल स्टडी द ओवरऑल मोशन. क्लियर है? तो चलो भाई शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं एक पर्टिकुलर कांसेप्ट की. इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड मोशन, तो यार सबसे पहले टेल मी व्हाट डू यू थिंक बाय स्टेट ऑफ ए बॉडी. किसी भी बॉडी की जो स्टेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ स्टेट ऑफ अ बॉडी. लाइक व्हेन वी कैन से अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन. ओके, अब काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच यू स्टडी अबाउट मोशन विदाउट बॉदरिंग अबाउट द कॉज ऑफ द मोशन. क्लियर? देखो, ये सारी चीजें शुरू की स्टोरी है, बस इसको सुनते रहो, इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके गाइस, हियर जब भी आपको कुछ नोट डाउन करना होगा, आई विल लेट यू नो. ओके, राइट नाउ यू डोंट नीड टू नोट डाउन एनीथिंग, यू आर जस्ट सपोज्ड टू लिसन. ओके गाइस, दैट्स गुड. व्हेन द बॉडी इज मूविंग, इट इज इन मोशन. ओके गाइस, सो सी हियर, तो यार सबसे पहले मोशन के मैंने बेसिक पैरामीटर तुम लोगों को बता दिए.
डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया. All these things are basic parameters of motion. Okay. But before this, let's try to understand like what is the meaning of rest and what is the meaning of motion. Clear guys? Okay. चलो यहाँ देखते हैं हम लोग. For example, if I ask a particular question, if we are standing, suppose I am standing over here just like this, and you guys are looking at me. Can you tell me whether I am in state of rest or motion? Suppose I am standing like this. Clear? Can you tell me I am present at rest or motion? Yes. Rest. Okay, very good. Sister is telling me rest. Okay, I can see a police rest. Ashish, Nilaksha, Prajakta. Okay, rest. Okay. So see guys, see that's the interesting part. If I am standing over here and I simply ask you guys what is my state. Okay, majority of the students, as I can see, they are okay. 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 One by one, guys. One by one. Like Mukul. Depends on the viewer. Okay. Depends on the viewer. Okay. Okay. I think you have already attended our online lecture, but no problem. Okay. So see here. Rutraj is telling you with respect to whom? Okay, very good guys. Keep it up. Ishika, it is dependent upon observer. Very good. Bhargav is telling me yes. Okay, okay, okay guys. So Bhargav said rest, rest, Bhargav rest. Okay. So see here guys. First, try to understand what is the meaning of a state. Let's take a simple example जो मैंने अर्थ का एग्जांपल मैं हमेशा लेता हूँ. ठीक है. यहाँ पे ध्यान से देखो. Suppose we are talking about Earth. Okay guys. And a person is standing over here. Oh. Another person is standing over here. And the earth is rotating. Suppose this person is Mr. A and this person is Mr. B. Clear? Just like two of you. ठीक है, आप में से कोई भी दो फ्रेंड हो सकते हैं. And they are standing at a particular place and they are looking at each other. Clear guys? Just like I am standing here, you guys are sitting over there and both of us are staring at each other. If I ask you what is my state, what was your answer? Sir, in a state of rest, obviously. जब आप अर्थ के ऊपर stand still है, yes, that's right, Mr. A and Mr. B. When you are stand still on the surface of earth, हमें क्या समझ में आता है कि both of us are stationary. But suppose करो there is another person who is present on moon, ठीक है? Clear है? Suppose करो कोई तुम्हारा friend है, वो कहाँ पे चला गया? He simply went on to moon, clear? और जब मून से वो तुम्हें ऑब्जर्व करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब मून से वो तुम्हें ऑब्जर्व करेगा, देन व्हाट ही विल सी? ही विल सी दैट अर्थ इज रोटेटिंग. ओके, व्हाट ही विल ऑब्जर्व? ही विल ऑब्जर्व दैट अर्थ इज रोटेटिंग. और चूंकि अर्थ रोटेट कर रही है, दैट्स व्हाई इसके ऊपर जो पर्सन है, हु आर द पर्सन? पर्सन्स आर मिस्टर ए एज वेल एज मिस्टर बी. ओके, वेरी स्मार्ट पर्सन. एज यू कैन सी, these two person, Mr. A and Mr. B, they are sitting on the surface of the earth. Okay. तो जब हमारा C वाला जो पर्सन है जो कि मून पे गया, and when he will observe the earth, what he will see? He will see that earth is rotating. And if the earth is rotating, Mr. A and Mr. B are also rotating. Clear guys? अर्थ रोटेट हो रही है, Mr. A और Mr. B भी अर्थ के सरफेस पे हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं? They are also rotating. Clear guys? Okay. Okay. ठीक है. So because they are rotating, just look at here what is going on. अगर आपसे पूछा जाए, अगर मिस्टर ए से पूछा गया, now try to understand this concept. Mr. A, Mr. B and Mr. C. Okay. Remember all these persons are very important throughout the physics. They will be with you and they will make you understand physics in an easy way. Okay. Okay, what Bhargav is saying, A is Mr. Okay, A is the one. Okay, see here. ओके ठीक है. तो यहां पे देखो बेसिकली होगा क्या. सपोज करो हम लोग मिस्टर ए से क्वेश्चन पूछते हैं. मिस्टर ए से अगर पूछा जाए व्हाट इज द स्टेट ऑफ मिस्टर बी, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो मिस्टर ए क्या करेगा? ही विल लुक एट मिस्टर बी एंड ही विल से दैट मिस्टर बी इज प्रेजेंट इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. क्लियर गाइस? बिकॉज़ व्हाट इज गोइंग ऑन, बोथ ऑफ देम आर स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ.
और जब वो एक दूसरे को देखेंगे तो दे विल सी ईच अदर स्टेशनरी। क्लियर गाइस? तो मिस्टर ए जब मिस्टर बी को देखेंगे तो मिस्टर बी किस में दिखाई देगा? रिस्ट में दिखाई देगा। बट इन द सेम वे वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके गाइस, जस्ट अ मिनट, it can be a glitch. I hope right now it's normal or not. Okay, now it's clear, okay guys, so I hope it's clear right now. Okay, it's fine. Sometimes it can break, no problem. A little bit glitch can occur, ठीक है, but थोड़ी देर के बाद वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ओके ठीक है, चलो यहाँ पे फोकस करते हैं। अब यहाँ पे देखो, if we ask the same question to Mr. C, अगर मिस्टर सी से हम सेम क्वेश्चन पूछते हैं तो व्हाट ही विल ऑब्जर्व, ही विल सिंपली से कि जो अर्थ है अपनी, दैट पर्टिकुलर अर्थ इज रोटेटिंग, एंड बिकॉज़ अर्थ इज रोटेटिंग सो ए इज रोटेटिंग एज वेल एज बी इज आल्सो रोटेटिंग। दैट्स व्हाई ही विल से दैट द स्टेट ऑफ मिस्टर बी इज इन स्टेट ऑफ मोशन, और सिंपली व्हाट विल बी द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर सी? सो मिस्टर सी विल सिंपली से कि जो सी है, जो बी है वो अर्थ के साथ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। Now see here, this is a contradiction. Clear? अगर हम A की बात करते हैं तो वही सेम पर्सन तुम्हारा रिस्ट में है, बट अगर हम C की बात करते हैं तो वही सेम पर्सन अपना किसमें है? मोशन में है। What does it mean? It simply means the state of a body depends upon whom there is only one single word and that is observer. किसी भी बॉडी की जो स्टेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो खुद के ऊपर डिपेंड नहीं करती, that depends upon the observer. As you can see, Mr. B is at rest for Mr. A, but Mr. B is in motion for Mr. C. So if I say, can you tell me whether anybody is present in a state of rest or in motion? Answer is no. Clear? कोई भी बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है, एनी XYZ बॉडी कैन बी प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ मोशन आल्सो। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। क्लियर गाइस? सब कुछ ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करेगा। डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जर्वर अ बॉडी कैन बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड डिपेंडिंग ऑन अनदर ऑब्जर्वर द सेम बॉडी कैन बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन। क्लियर गाइस? सो राइट आवर फर्स्ट पॉइंट। Okay, I hope it's clear. Right? Yes, relative motion. Write down first point in kinematics. A body is present. Okay, guys, you have to write down as a theory. Okay, write down first point. A body is present. Okay. Yes, Bhargav. I hope you remember Sita and Geeta. Right? Write down the statement. A body is present in a state of rest or motion. A body is present in a state of rest or motion. It depends on the state of it depends on observer. Simply write it down. A body is present in a state of rest or motion. It depends upon observer. Clear, guys? I hope everybody has written it. Okay, I hope as everybody has written it. Done. Okay. अब यहाँ पे देखो सेकेंड पॉइंट which we will study, that is, अब देखो मोशन को आपने समझ लिया। मोशन इसीलिए हम कहते हैं कि मोशन तुम्हारा एब्सोल्यूट नहीं होता। Another tagline is motion is never absolute. Motion is always relative, means it always depends upon the state of the observer. Clear है? अब देखो अगर मोशन को हमने समझना है तो before understanding motion, first of all we will try to understand the parameters of motion, and as I have already discussed, what are the parameters? Distance, displacement, velocity, acceleration, so on and so forth. So we are going to study the first parameter, and that particular parameter is distance and displacement. Write down first point, distance and displacement. First point will be distance and displacement. Okay, I think Srishti in last class you asked me a particular question. Okay, that was based upon distance and displacement. We are supposed to find out the ratio. Okay, so see here,
What is the definition of distance and displacement? Very simple. What is distance? Okay, can anybody answer me? What is the difference between distance and displacement? Yes, Aman. Okay, Aman, what are you saying? Okay, right. And what about displacement? Shortest distance. Okay. Yes, Aryan, are you trying to say something? Okay. And what about displacement? Starting and ending point. Okay. Yes, no, I'm actually yes, right. Displacement is the shortest distance between initial and final point. Okay, you are absolutely right. What about rest of the student? What do you think about distance and displacement? Yes. Okay, right. Good. Distance is the path which is covered by the body. And what about displacement, Ansh? Okay, good. So Disha, displacement. Okay, as I can see, Dilaksha is telling me also. So many students are giving me definitions. Okay, guys. So suppose again, if Corona is not there and you are used to come to the coaching and then again went back to your home. Okay. Suppose the situation is like this. You are coming to the classes and then you are going back. What is your displacement? Okay, very nice. Mukul, Sisti and Chaitanya, all of you have given the right answer. Okay, Vandita is telling me distance is the actual path and displacement is the shortest path. Right, very good. Siddhi, 0, okay, yes, you guys got it right. Very good, Nilaksha, Soumya, Aman, distance. Okay, Aman is also telling me a relationship like distance is always greater than or equals to displacement. Bhargav, Shaili, Ishwari, Ridra. Okay, nice guys, very good. तो कहने का मतलब क्या है यार, देखो डेफिनेशन तो अपनी क्लियर है. What is distance? Distance is the actual path followed by the particle. What about displacement? Displacement is the shortest path followed by the particle. Okay. तो चलो काम करते हैं. Yes, somebody was asking something. Ansh. Displacement can be 0, but distance cannot be 0. Yes, right. If the particle is moving, suppose अगर particle is stationary है, then distance and displacement both of them are 0, right? Yes, Anisha. Yes, that's also a new and right difference. ठीक है, ये एक अलग point हो रहा है. Distance is a scalar and displacement is a vector quantity, right, Anisha? Good. Okay guys, so definition is clear, like what is the meaning of distance as well as what is the meaning of displacement. So let's try to understand this by a simple problem. Clear guys? Suppose here is the question. A particle travels from point A to point B. See here guys, what is going on? एक particle है जो point A से point B पे जा रहा है. How many paths are there? See here, via 3 paths, something like this. Okay. Something like this. Okay, उसको ध्यान से समझना है. तो particle is moving from point A to point B. This is our path number 1. This is our path number 2, and this is our path number 3. Clear guys? The semicircular path is the path number 1. The straight line path is the path number 2, and then this rectangular path on this path, something like this. Who is the person, guys? Once again, what is the name of the person? Mr. A. Very good. तो यहाँ पे देखो Mr. A भाई साहब जो रखते हैं, he is moving from point A to point B via 3 paths. And what we are supposed to do? We are supposed to find out the value of distance as well as displacement through path number 1 as well as path number 2 as well as path number 3. Clear guys? So what we want to find out? First we will write down path. Then we will write down distance and then we will write down displacement. Okay, so we want to find out all these values for the 3 paths.
I hope the question is clear to everybody. Now see here, if I talk about path number 1, okay, let's see if the radius of this path is given as 2 meters, okay guys, and this particular length is given as 10 meters, and this length is obviously you can know, okay. तो यार यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, first try to understand we have 3 different paths, path number 1, path number 2 as well as path number 3, clear guys? And what I want to find out, I want to find out distance as well as displacement. चलो path number 1 से शुरू करते हैं. See here, guys, look carefully. Path number 1 को अगर देखो तो it's a semicircular path, something like this. Okay. If I say what will be the distance? Answer me, everybody. What will be the distance? Pi r, 2 pi. Okay. Yes, Siddhi. Assisting pi into r, okay, 44 by 7. So I think you have already substituted the values, right sir? Right, Siddhi? Okay, good. Siddhi is telling pi r. Okay, so see here guys, what is going on actually. अगर पार्टिकल आपका इस पॉइंट A से मूव करता है पॉइंट B की तरफ, तो see here, this is the actual length. So this length, this particular length, ये जो लेंथ है, it is length of a semicircle. Clear guys? What is the total length of a semicircle? That comes out to be 2 pi r. Clear? If I talk about the total length is 2 pi r. So what will be the half of the length? Half of the length will be equals to pi times r. What is the value of pi? That is 3.14. What is the value of r? That is 2. So I will write down 3.14 multiplied by 2. That comes out to be 6.28 meters. Right ones. तो यहाँ पे देखो, अगर मैं फर्स्ट पाथ की बात करता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पाथ द डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 6.28 meters. What about displacement? Yes, displacement is 4. Chaitanya right? Okay guys, 4 is right. Very good. Amaliza, yes, shortest length. Nilaksha 4 meter. Okay. So as you can see, everybody is able to understand. Like the displacement will be the shortest distance between starting point as well as ending point. Now see again, this is my starting point and this is my ending point. तो shortest length का मतलब क्या हुआ? Simply देखो, whenever you want to find out the shortest length, connect the starting point to the ending point via straight line. ठीक है? क्या करना है आपने को? एक straight line draw करनी है और उससे starting और ending point को connect कर देना है. Clear? This is my starting point, this is my ending point. मैंने इसको connect कर दिया. Now as you can see, this is the diameter. This length is 2 meter, this length is 2 meter. So in this case, displacement comes out to be 4 meters. What you can observe, the value of distance is greater than displacement. From A to B, the value of distance is greater than displacement. Okay, Nilaksha, what are you trying to say? Okay, Nilaksha, we are just waiting for your response. Otherwise, we will go to the second path. Okay, nothing. That's okay. Okay, guys. So first path is clear. Let's talk about the second path. Okay. Now see, if you are talking about the second path, this is my point A and this is my point B. Okay. If we talk about distance, see here, what is the length of this path? What is the length? This is 2, this is 4. Very good. So this length is 4 meter. Okay. Now, if I talk about displacement, what was displacement? The shortest length between yes, it is the shortest length between the starting point as the ending point. यार यहाँ पे देखो starting point से connect कर दिया. This length is also 4 meter. Okay. Now let's talk about the third path. Okay. If we talk about the third path, see here we have a rectangular section like this. This is our third path. Okay. This length is 10 meter. So this is 10 meter. ये length भी तुम्हारी कितनी हो जाएगी? This will also be 10 meter. And this whole length is 4 meter. So this will also be 4 meters. Okay, very nice, Steve. See here, guys. What is the actual length? If the particle is moving like this. So in this case, 10 plus 4 plus 10. So it comes out to be 24 meters. Our final answer. In third case, distance will be 24 meters. What about displacement? Okay, yes, right.
Okay, right. Prajakta, it's okay. 24, only 4. Okay. So I can see maximum students are able to understand like the value of displacement will be 4 meter. Okay. डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर से हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग को हम एंडिंग से कनेक्ट कर देंगे एंड द शॉर्टेस्ट लेंथ कम्स आउट टू बी 4 मीटर. तो सी हियर एवरीवन वी हैव few important conclusions. देखो, in first case what is going on? In first case distance is greater than displacement. In second case distance is equals to displacement, and in third case displacement is greater than, distance is greater than displacement. So we can come back to a common conclusion. क्या होगा बच्चों? Distance of a particle is always greater than or equals to displacement. Clear? Just write it down also. जो भी पार्टिकल का किसी भी मोशन की बात करेंगे, the value of distance will be greater than or equals to displacement. So this is our common conclusion. The value of distance will be always greater than or equals to displacement. Copy up to here and let me know if anyone has any doubt. See here, just copy up to here, copy the whole board. Okay, very nice. Okay, I hope it's done by everyone. Okay guys, final call. Is there anyone who still has any doubt in this section? It's right time to let me know. Okay. Okay, Arjita. Okay, Arjita, just copy it and let me know if anyone has any doubt. Right now we have studied about distance and displacement. After this we will talk about velocities. Okay, Shali done, Arjita, wait. Okay, done. Okay, Valita done. So I hope guys it's clear to everyone. Okay, so see here, let's talk about the next parameter. The next parameter will be velocity. Distance and displacement, both of them are clear, covered. Okay, done. Okay. Right now let's study. Okay. If you have copied up to here, then it's more than sufficient. Write down the next heading. Velocity. Okay. Write down the next heading, that is velocity. अब यार चलो next parameter हम study करते हैं, that is velocity. Try to understand. Okay. Now, can anyone of you define velocity? Like what is the definition of velocity? I hope all of you have studied in your high school standard. Okay. So how to define velocity? The ratio of displacement by time. Yes, Anisha. Okay, that's right. Absolutely, velocity is the vector quantity. But see here, Anisha, we are trying to define velocity. Okay. So, can you tell me the definition of velocity? Yes. Anyone? Okay. See here, I am also looking at few definitions. Like Ishka is telling me, Utkarsha, speed with direction. Ishika, it's a speed in a particular direction. Okay. Disha, distance in a specific direction. Arjita, speed with direction. Okay. Anyone else? Yes, Chaitanya. Distance covered by the antibody in a particular direction is known as velocity. Okay. Soumya is telling me shortest distance covered in unit time. Okay. Prajakta, displacement covered in per unit time. Yes. Aryan. In per unit time, okay. Aryan, yes. Aryan, what are you trying to say? Okay, Aman, okay, that's right. Anyone else? Guys, see here, what you want to do, you want to understand velocity, okay? So, till now, the definitions I am having like speed in a particular direction or displacement divided by velocity, okay? Distance covered by a body in a unit time. Okay guys. What about next? Anyone else? Rate of change of position of object with respect to time. Okay, good. Devang. Rate of change of position of the object with respect to time. Okay, ठीक है. That comes out to technical discussion.
Nil Aksha, distance covered by the body in a particular direction. ओके सी है, सबसे पहले तो बच्चों अपने को एक काम करना पड़ेगा। ये जो हाई स्कूल में तुम लोग कचरा पढ़ करके आए हो उसको अपने दिमाग से निकाल दो। क्लियर? बिकॉज वट एवर डेफिनेशंस यू हैव स्टडीड इन हाई स्कूल 99.99% ऑफ दिस इज रॉन्ग। जस्ट लाइक लेट मी स्टार्ट विद ओके let me start with like velocity. Like few students has told me it's a speed in a particular direction. So guys, first try to understand velocity is a vector quantity, speed is a scalar quantity. So don't try to define velocity with the help of speed, it would be wrong. Clear? क्यों कह रहा हूं मैं? Speed scalar, velocity vector. And what are you trying to do? You are trying to define a scalar quantity. You are trying to define a vector quantity with help of a scalar quantity, so that will be wrong. Okay. Now see here, कुछ इंफॉर्मेशन मुझे बताया velocity is equals to displacement divided by time. Okay. Now guys, once again this definition it's not wrong. I will not say this particular definition is wrong. मैं ये कहूँगा it's not right. Clear? I will not say it's wrong. I will simply say it's not right. क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये सारे केसेस में तुम्हारी सेटिस्फाई नहीं होती। यस, Siddhi is trying to say something. Yes, Siddhi. Okay, Siddhi, just let us know so that we can move forward. Okay. Okay, Siddhi, what are you typing? You are typing a lot of things, I guess. Yes. Siddhi, where are you? I can't see anything. Okay, so see here guys. तो मैंने क्या कहा? Velocity, basically definition which you have studied in your high school standard, like its speed in a particular direction, that is absolutely wrong. Velocity equals to displacement divided by time. That is not right in all the cases. Okay, I will not say it wrong. And like two definitions, speed moves in a particular direction. Okay, Alan is trying to say something. Okay guys, so see here, in this class, in this particular class, first time let us try to understand like what is velocity. Okay. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर अगर ये डेफिनेशंस रॉन्ग थी तो हम हाई स्कूल में हम इनको क्यों स्टडी करते थे? बिकॉज द रीजन इज क्वाइट क्लियर. व्हाट इज द रीजन? लेट मी आस्क यू, इफ द डेफिनेशन इज नॉट राइट तो इसको हाई स्कूल में क्यों स्टडी क्यों करते थे? कैन एनीबॉडी आंसर? आई एम जस्ट ओके, एनीवन एल्स? Okay, Chaitanya is trying to say something. Okay, are distance covered by an object in unit time is right definition of its wrong definition? Because velocity is a vector quantity, you can't associate a vector quantity, you can't define a vector quantity with help of a scalar thing. Okay, Devang is telling because real definitions हमारे काम की नहीं थी. Okay, that's not right. ठीक है? Okay guys. ठीक है? Okay, Aryan, let me clear you. Distance covered by an object in unit time, it's wrong. Because when okay, Devang, ठीक है? अरे anyone else यार फटाफट बता दो ना तुम लोग so that we can move forward. Yes. Okay. So no problem at all. See what happens, guys. You study such type of definition is in high school because it's high school. ठीक है, कुछ भी पढ़ा दो, कुछ भी लिख दो, सब चलता है. सब फायदा नहीं पड़ेगा. No, it's not like that. See guys, what happens. But yes, in 11th standard and especially if you are preparing for competitive exam like JEE or NEET, you must be absolutely clear. Crystal point clarity should be there. Yes.
Okay guys, so don't guess about this, just try to understand like how to define velocity. Okay, पहली चीज देखो यार, अगर मैं velocity की बात करता हूँ, suppose if I am talking about velocity, तो first we have to understand what is the physical meaning of velocity. Okay, जैसे suppose करो, suppose you are coming to the classes, okay, and now when you are coming to the classes, if I simply ask if you are coming from your home to the class, what is your velocity? Clear? You can't answer this. You can't answer this. Why? Because the reason is quite simple. भाई अपने घर से जब आप क्लास की तरफ आएंगे तो it doesn't happen in a single instant. Clear? First क्या करना पड़ेगा बच्चों? घर के बाहर वॉक करना पड़ेगा. उस तो तुम वॉक करते हुए घर से बाहर आओगे. After then, what you will do? You will try to drive a two-wheeler or four-wheeler, or you will simply catch a particular bus. क्लियर? कोई ना कोई पर्टिकुलर आप बस या टू व्हीलर या किसी न किसी पर्टिकुलर साधन का यूज करेंगे. क्लियर? एंड आफ्टर देन व्हाट विल हैपन? आफ्टर देन यू विल गेट डाउन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर व्हीकल एंड देन यू विल कम टू द क्लास विद द हेल्प ऑफ स्टेयरकेसेस. सो सी हियर, अरे इट ऑलवेज हैपेंस लाइक दैट ना यार, ऐसा तो नहीं होता ना तुम अपने घर में स्कूटर उठाया सीधे स्ट्रेटली और सीधे कोचिंग में लैंड कर गए. इट डजंट हैपन लाइक दिस. क्लियर? एरोप्लेन, यस, भार्गव इज टॉकिंग अबाउट एरोप्लेन. हां ठीक है, घर के छत के ऊपर लैंडिंग वाला वो उड़वा लेना, वही उड़ान बनना और सीधे कोचिंग में ड्रॉप. राइट? ओके गाइस, तो सी हियर व्हाट इज द पॉइंट. मेट्रो, बेटा मेट्रो घर में नहीं जाती तुम्हारे. मेट्रो भी कैच करने के लिए तुम्हें वॉक करके जाना पड़ेगा. Do you live at metro station? In that case, it's possible. Okay? I hope not. बच्चों ध्यान रखो, मेट्रो से पॉसिबल नहीं है. मेट्रो आपके घर में से शुरू नहीं होती. Try to understand. Until and unless you don't live at metro stations. Okay, fighter jet. Okay, भारत में स्पेलिंग में fighter jet. लो भैया शुरू हो गए सारे के सारे. Fighter jet, space craft, बस ठीक है, बातें करवा लो. Okay, right. ओके ठीक है. तो कहने का मतलब क्या है? इफ यू आर कमिंग टू द क्लास, continuously you are changing your vehicle. First see here what is going on. First you have to walk for a few time, then you catch a particular vehicle. It can be a two-wheeler, it can be a four-wheeler, it can be a metro, it can be a bus, it can be anything. Okay guys, I'm just looking at your comments. Okay, तो कहने का मतलब क्या है? सपोज करो जब आप वॉक कर रहे हो तो व्हाट इज द स्पीड पॉसिबल. सपोज तुम 2 किलोमीटर पर आवर से वॉक कर रहे हो और 3 किलोमीटर पर आवर से वॉक कर रहे हो. बट वंस यू कैच अ पर्टिकुलर व्हीकल, सपोज इट्स अ बस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस? 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर. क्लियर गाइस? ये देखो 60 विल ड्राइव अ मेट्रो. ठीक है, मेट्रो में बैठ के नहीं आना, मेट्रो चला के आएंगे भाई. ठीक है, ओके, दैट्स राइट. हाँ, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेट्रो के पैसे दिए हैं तो बैठेंगे भी चला के आएंगे. राइट यार, तुम्हें एक काम करना है, अगर तुम्हें छतरपुर चौक से आना तो मुझे भी लिफ्ट दे देना भाई. ठीक है, मैं भी आ जाऊंगा. आवाज हॉर्न दे देना, बस सीटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा. ओके गाइस, सो see just listen to me, Shelly. Okay, एक्चुअली एनीवे छत्रपति चौक. अगर आप उधर के मेट्रो लेकर के आ रहे हो तो कृपया मुझे भी बता देंगे, मैं भी. ओके अर्जिता, ओके ठीक है, राइट, ओके बिल्कुल. अनीशा, यस, ओके. सो सी हियर गाइस, लेट्स कम बैक. ओके राइट, हाँ ठीक है. Okay, right. Okay, so see here what is going on, guys. Okay, everybody just now look at the board and try to understand the concept. एक काम करते हैं, पहले velocity finish कर लेते हैं and after that I will decide whether I want to come with by metro or fighter jet or spacecraft or whatever. ठीक है, बाद में decide कर लेंगे हम लोग मिल बैठ के. एक दिन फाइटर जेट में आऊंगा, एक दिन स्पेसक्राफ्ट में और एक दिन मेट्रो में. ठीक है, चलेगा? Okay guys, ठीक है. So see here, I was talking about velocity. Okay guys, just stop it. Let's try to understand velocity. Okay, चलो भाई. तो यार क्वेश्चन क्या होगा? If I ask you a simple question, because once you are walking, your speed is nearly 2 to 3 km per hour. But if you have taken a particular vehicle, your speed is somewhere close to 60 to 70 km per hour.
Once again you are walking up to the classes, in that case your speed can be maximum 2 to 3 km per hour. So if I ask you a particular question, what is your velocity, can you answer that particular question? Absolutely impossible. Why it's impossible? क्योंकि तुम्हारी स्पीड की एक सिंगल स्पीड या वेलोसिटी you don't have a single value. तुम्हारी velocity continuously change हो रही है. Clear guys? So you will see two types of velocities. Suppose a motion is possible in which your velocity is continuously changing. Okay. In that case, you have to define velocity in a different way. But suppose if I ask you, suppose think it like this, guys. Just yes, sister, you are right. Right now I am talking about average velocity. What does average velocity means? Where velocity is changing in a particular time interval. Clear? For some time it is different, next time it is different, for next time it is different. So if my velocity is changing in a particular time interval, I don't have a single value of velocity. In that case, what I will define? I will define average velocity. Clear guys? Okay. Now, what about next type of velocity? Suppose if you are walking from your home to the metro station. Clear guys? And it takes 1 hour from 6 to 7. Then you catch a metro and reach at Birdi station. It takes time from 7 to 8. And then you walk to the coaching and it takes time from 8 to 9. Clear? तो 6 to 7 तुमने walk किया घर से, 7 to 8 तुम present हो metro में, और 8 to 9 you are once again walking. And if I ask you what is your velocity at 7:30 a.m. Clear guys? Try to understand what is your velocity at 7:30 a.m. Then you will recall यार 7:30 पे कहाँ था मैं? Suddenly तुम्हें याद आया, ठीक है? You remember like at 7:30 I was present in the metro. And at that time metro was moving at a speed of 80 km per hour. So what is your velocity? Your velocity is also 80 km per hour. So what is going on? Once I fix the time, जैसे मैंने time की value fix कर दी, your velocity is also fixed. So in this case, अगर मैंने time fix किया, तो आपकी velocity fix हो जाती है, और इस तरह की velocity को what do we call this? We call this instantaneous velocity. Yes. So somewhere you are right. Okay, Ranjit. Yes. All of you guys are right. What do we call such type of velocities? Instantaneous velocity. तो दो तरह के velocity हम define करेंगे. First we will discuss average velocity and then we will discuss instantaneous velocity. Average कब define करेंगे? When your velocity is changing in a particular time interval, then we talk in terms of average velocity. But when we want to find out the velocity of a particle at a specific time, जैसे I told you what is your velocity at 7:30, then such type of velocity is known as instantaneous velocity. Okay. Have you heard this word before? Instantaneous. Okay, guys. No, Utkarsh, no. Okay, when? Okay, recorded lecture. Okay, no problem. तो जिन लोगों ने recorded lectures नहीं देखे हैं, उनको मैं थोड़ा सा पहले explain कर देता हूँ. जिन लोगों ने देख रखा है, obviously they will understand like what I am talking about. अरे वाह, क्या बात है. Instantaneous का मतलब अचानक. Very good. यार मस्त हिंदी ट्रांसलेशन किया तुमने, दिल खुश हो गया भाई. Instantaneous, अचानक कुछ हो जाता है तो उसको कहते हैं instantaneous, right? Okay, what do you call अचानक in Marathi? Okay, see here. At a particular instant, right? Achanak, it's I don't think it's a Marathi word. Okay, Marathi and Hindi. I think it's common in both the languages. Yes, right. Okay. Okay, Achanak is Marathi word. Okay, Raj. Okay, so see here. So many of you are confirming Achanak. तो ये word मैंने बहुत दिनों बाद सुना है actually. एकदम. Okay, yes, एकदम. It's a Urdu word, I think. Okay, so see here. What we are talking about? Instantaneous. देखो, instantaneous response is not a new thing. ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ instantaneously suddenly something happens, clear? और हमें इतना टाइम नहीं मिलता सोचने का.
ठीक है। सपोज करो बच्चों व्हाट इज गोइंग ऑन, ओके सपोज करो व्हाट इज गोइंग ऑन, यू आर वॉकिंग, ठीक है, एकदम काली अंधेरी रात, कुछ भी नहीं दिख रहा और आराम से आप गाना गाते हुए नन्ना मुन्ना राई हो, देश का सिपाही हो, समथिंग लाइक दैट, एंड डांस करते हुए आप चले जा रहे हैं, एंड सडनली व्हाट हैपेंस, ठीक है, सडनली व्हाट हैपेंस, यू सिंपली हियर अ हिस साउंड, फुस की आवाज आती है, एंड व्हेन यू लुक एट द ग्राउंड देयर इज अ किंग कोबरा स्टेरिंग एट यू लाइक दिस, ओके, किंग कोबरा, ब्लैक किंग कोबरा स्टेरिंग एट यू, देन व्हाट डू यू डू? सपोज करो तुम जब रेस्टोरेंट में जाते हो तो फर्स्ट यू सी द मेन्यू, लाइक अच्छा ठीक है क्या क्या खाना है, समोसे खाने हैं, गोलगप्पे खाने हैं, चिकन मटन जो भी आइटम्स अवेलेबल है मुझे वो खाना है, तो यू टेक सम टाइम, बट वंस यू सी द कोबरा और किंग कोबरा व्हाट हैपेंस? डू यू थिंक लाइक दिस, अरे सामने कोबरा है, मैं इसके पास जाऊं या ना जाऊं, है लेफ्ट से जाऊं, राइट से जाऊं, कूद के जाऊं, राइट, नथिंग, यू डोंट थिंक एनीथिंग एट ऑल, clear guys? Once you are walking and you suddenly hear a particular sound, suddenly cobra comes in front of you and cobra is calling you, aja aja beta aja, what do? Suddenly you turn, right? Suddenly you turn and you start running, clear? In that particular case you don't think anything, so what is this response? This is इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स। ये जो इंस्टेंटेनियस वर्ड है ये वहीं से आता है कि उस रिस्पॉन्स के लिए जिसमें कोई भी टाइम लैगिंग नहीं होता, क्लियर गाइस? ओके, सो इंस्टेंटेनियस मींस सिंपली अ स्पेसिफिक टाइम या एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई भी टाइम आपका कंज्यूम नहीं हुआ है, क्लियर गाइस? सो इंस्टेंटेनियस सिंपली मींस स्पेसिफिक टाइम, लाइक आई सेड 7:30 AM, 7:30 is a specific time, clear guys? Okay, reflex reactions, yes, reflex reactions इनमें टाइम नहीं कंज्यूम होता है क्योंकि इसमें आपका ब्रेन यूटिलाइज नहीं होता, clear guys? You don't think at all in reflex reactions, right? ये आते कहां से reflex reactions? Okay, let me ask. No, it's not instinct, Devang. This is governed by your particular body. ये माइंड से गवर्न नहीं होता है रिस्पॉन्स, ये किसी और पार्ट से गवर्न होता है। आई एम जस्ट आस्किंग यू गाइस, या यस यस, सौ में यू आर राइट, 100% राइट, इट इज गवर्न बाय स्पाइनल कॉर्ड, राइट, क्योंकि ब्रेन तक सिग्नल जाना, फिर ब्रेन उसको एनालाइज करेगा, फिर वापस आएगा, तब तक तो कोबरा भाई साहब आपको डस चुके होंगे, आपकी आत्मा का परमात्मा में विलय हो चुका होगा। ओके ओके ओके, इट वाज गोइंग इन बायो, ठीक है, राइट, ओके, दैट्स गुड। तो बच्चों देखो ध्यान दो, वो जो रिस्पांस आता है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड का रिस्पांस होता है, सो दैट बॉडी इमीडिएटली एक्ट करती है, उसमें माइंड का कोई काम नहीं होता। अब आप लोग कहेंगे सर माइंड का वैसे भी काम, अच्छा ठीक है, वैसे यू डोंट यूज योर माइंड, ओके, ठीक है, राइट, ओके ओके, सो सी हियर गाइस, आई कैन से लाइक दिस, उस केस में अगर इस तरह के मूवमेंट आता है तो उसमें आप अपने दिमाग का यूज नहीं करते, राइट? ओके, सो सी हियर, तो दो तरह की वेलोसिटी अपने को समझ में आ गई, फर्स्ट हो गई एवरेज वेलोसिटी एंड सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो व्हेनेवर समवन आस्क यू like what is the, how can you define velocity, first you have to tell him we can define velocity in two ways, either in average velocity or instantaneous velocity, clear guys? अच्छा, और भी कई तरह की velocity होती है, for example RMS velocity which we call root mean square speed, VMS mean square velocity, clear? बट हम अभी इनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। राइट नाउ इन मैकेनिक्स वी आर फोकस्ड ओनली अबाउट टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, फर्स्ट वन इज एवरेज वेलोसिटी एंड सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस। सो गाइस, इन वेलोसिटी राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग एवरेज वेलोसिटी। फर्स्ट we will talk about average velocity. Okay, average velocity. Let's see the definition. What is the value of average velocity? We will simply write out the definition like this: V average is equals to total displacement. Remember guys, V average equals to total displacement divided by total time. Okay,
total displacement divided by total time. मीन्स पहले चीज देखो, टोटल टाइम की अगर वो बात कर रहा है तो इट सिंपली मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. Whenever you are talking about average velocity, it simply means you are talking about a time interval. Okay. So see here, I will introduce a particular graph and let's try to understand that. यहाँ पे ध्यान दो. Suppose करो this represent x. X means what? X means displacement. चलो बच्चों ध्यान दो. ठीक है. Look at the board carefully. We are trying to understand. Video pause. Okay. Judgment right now is clear or not? Let me know. Arjita. What about rest of the students? Is it clear? Okay. Okay, that's good. और अर्जिता just do one thing. अपने ब्राउजर को एक बार रिफ्रेश कर लो, है ना? उसको रिफ्रेश कर लोगे तो I think it will be clear. Okay, तो चलो भाई यहाँ पे देखते हैं. See here, what we are talking about? We are talking about x versus theta. Clear guys? Okay, ध्यान देना. What is going on? We are talking about a simple graph. ये एक ग्राफ है, ठीक है. अब एक पार्टिकल है जो सपोज करो इस पॉइंट ए से शुरू करता है मोशन और कहां तक जाता है, बी पॉइंट तक जाता है. क्लियर है? सो ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बी इज द एंडिंग पॉइंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ग्राफ को ध्यान से समझना. शेप कैन बी एनीथिंग. फॉर एग्जांपल मैंने एक कर्व ड्रॉ किया है, मैं एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूं, मैं एक पैराबोला भी ड्रॉ कर सकता हूं. कर्व कैन हैव एनी टाइप ऑफ शेप. क्लियर गाइस? So what you can see, A is the starting point, B is the ending point. अब देखो यहाँ पे कौन सा टाइम होगा, x एक्सिस पे क्या प्रेजेंट है, टाइम. अगर A पे मोशन शुरू हो रहा है तो एट द पॉइंट A the starting time I will call it as t1. क्लियर है? t1 टाइम पे मोशन शुरू हुआ. Now see here, B पॉइंट पे मोशन अपना एंड हो रहा है. At this point I will call this time t2. Now because motion has been ended at point B, so t2 is final time. So at t1 motion शुरू हुआ, t2 पे motion end हुआ. So what is the duration of the motion guys? The duration of the motion will be equals to t2 minus t. Okay, see here. The motion has started at time t1, the motion is ended at time t2. So what is the duration of the motion? Duration of the motion would be equals to t2 minus t1. Clear guys? Okay. Now see on y-axis. Y-axis पे ध्यान दो सभी लोग. See here, A point starting point है. Y-axis पे है displacement. तो this I will call this initial displacement x1. A पे starting है, तो A पे जो displacement होगा I will call this initial displacement. A पे जो time है I will call this initial time. अब यहाँ B पे ऑब्जर्व करो. B पे जो displacement होगा I will call this final displacement as x2. Clear guys? And what will be the final time? Final time is t2 or final displacement is x2. Clear? Sir, this means to define velocity. Yes, right. Aman, first, if you want to define velocity, you have to talk about average as well as instantaneous. क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे से अलग-अलग हैं, जो कि मैंने तुम्हें एग्जांपल के थ्रू बताया था. Okay? So I am moving forward and I am explaining this x versus t curve. Just look at the board. x1 is the starting displacement, x2 is the final displacement. So what is the displacement of the particle during the entire motion? That will be equals to x2 minus x1. Guys, just try to see and try to understand. If I say if the particle is moving from A to B, the starting time is t1, ending time is t2. Initial displacement is x1, final displacement is x2. So what is the total displacement? That will be equals to x2 minus x1. What will be the total time? That will be equals to t2 minus t1. So what will be our formula? V average equals to, I will write down x2 minus x1 whole divided by t2 minus t1. This will be our standard formula for calculation of average velocity. Now let's talk about few important points. Average velocity कब हमें calculate करनी है? When we are supposed to calculate average velocity? Tell me, फटाफट. Yes, Amal, that is absolutely right. I think you got it from the online lectures. Yes, yes. Right. But suppose in case you are not walking from your home to ideal point. Suppose if you have been provided a particular question, तो questions में हमें एवरेज वेलोसिटी का फंडा कब अप्लाई करना है?
No, not for good. Yes, so stick. Yeah, एक काम करो, जस्ट a minute यार, listen, be silent. भाई आप बोल लो, ये टाइम पास मत करो, एक बंदा बोल लो जल्दी से, बाकी सारे वेट कर रहे हैं। चलो काम करते हैं। 60 यस। वेरी गुड सिस्टर, एग्जैक्टली राइट, ठीक है। लेकिन एक बहुत सिंपल, देखो तुम्हारा आंसर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड दिस। सपोज करो कि एकदम देयर इज एन इलिटरेट पर्सन, एकदम अनपढ़ गवार टाइप का आदमी है, एंड उससे हमने पूछ लिया बता दे एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, देन ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड योर आंसर। एनीवन एल्स? Okay, who was the second one? Mrs. T. Who was the second one? Aman. Okay, so there was a second student who was trying to answer. बेटा कहाँ गए तुम? Yes, Mukul. Yes. Okay, Mukul. Okay, that's it. Okay, see here, I think I got a nice answer from whom? I think Soumya. Okay, when there are time intervals in the question. Yes, right. Okay, you can say this is the simplest form. See here guys, when you apply average velocity concept, जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में टाइम इंटरवल प्रेजेंट होगा, क्लियर? टाइम इंटरवल means language will be like this: a particle is starting from motion at t equals to 10 second and continued its motion from t equals to 20 second. So whenever time interval is there, in that case you are supposed to apply which concept? In that case you are supposed to apply average velocity concept. Okay guys? Okay, now sister, your definition was quite right. Okay, ठीक है, your definition was right, but it was a little bit technical, but I don't know why you are feeling sorry. अच्छा ठीक है, okay, I got it, I can understand it from the chat box. Okay, ठीक है, चलो कोई बात नहीं. Okay, Shreyas, what is this? Don't type such type of comments. Shreyas, कृपया इतनी इमेजिनेशन मत करें, बंद करें। इमेजिनेशन करेंगे और फिजिक्स में, ओके? See guys, so in today's class we understood like what is the meaning of average velocity. Clear guys? Okay, so what is the value of average velocity? See here, average, this is equals to x2 minus x1 whole divided by t2 minus t1. Okay, so this is equals to total displacement divided by total time. Okay, yes, Suresh, always remember whatever are your comments, that should be healthy. ठीक है, ऐसा कमेंट बच्चों बिल्कुल मत करो जो किसी को अच्छा नहीं लगे, है ना? Okay, so I hope यार एक काम करते हैं, in today's class I have introduced average velocity. Clear? Next class से हम इसके ऊपर numerical solve करना शुरू करेंगे. Till then, okay, I hope you are able to understand. यार थोड़ा थोड़ा तो लोगों को समझ में आ रहा है काइनेमेटिक्स. बाकी बच्चों जैसे जैसे लेक्चर आगे चलता जाएगा फिर काइनेमेटिक्स को हम लोग मस्त उड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? Okay, so that's all for today guys. Is there anyone who wants to ask any question? Okay, then bye bye, take care everybody, see you.